नो योर कंपनी में। और आज जिस कंपनी के बारे में बातचीत करेंगे उसका नाम है साई कला मंदिर। ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है साउथ का, जो खास तौर पे विमेन एथनिक वियर में जिसमें साड़ियाँ डोमिनेट करती हैं, उससे लेकर के तमाम अलग अलग तरह के अलग अलग ओकेजन्स के कपड़े। हालांकि रेंज बहुत बड़ी है, जब 400 रुपये से लेकर के 3-4 लाख रुपए तक के कपड़े मिलते हैं। साउथ की स्पेशलिटी, जब आप उधर जाएंगे तो आपको इस तरीके के बहुत सारे ब्रांड्स मिलेंगे जो करते हैं। तो आसाई सिल्क कला मंदिर के बारे में हम बातचीत करेंगे। एक क्विक नज़र मार्केट पर डाल लेता हूँ। इस वक्त जो स्थिति है, लगभग 700 पॉइंट नीचे सेंसेक्स है, काफ़ी वीकनेस है, और निफ्टी में 200 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। लगातार ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और दो जो यूजुअल सस्पेक्ट हैं, HDFC बैंक और रिलायंस, जिनकी तरफ से सबसे ज़्यादा इसमें प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। इसी वजह से मार्केट काफ़ी वीक है। 1565 पे HDFC बैंक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मिड कैप में हालांकि थोड़ी सी रियायत है, बहुत मामूली सा 0.17% या 67 पॉइंट डाउन है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन में अब धीरे धीरे, यानी बढ़ने और घटने वाले शेयर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। अब लगभग 2 शेयर हर एक बढ़ने वाले शेयर के सामने कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं। तो ये मार्केट का ताज़ा हाल। और अब चलते हैं अपनी उस कंपनी के बारे में जिसका नाम है साई सिल्क कला मंदिर, जिसका IPO आया है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। ये 22 सितंबर तक खुला हुआ है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस बैंड 210 से 222 रुपये है, और कुल 1200 करोड़ रुपए इस से जुटाए जाएंगे, जिसमें फ्रेश इशू है 600 करोड़ रुपए का। बाकी शायद प्रमोटर्स बेचेंगे, अभी डिटेलिंग लेते हैं इन लोगों से। और अगर इसको हम कन्वर्ट करें मार्केट कैप में, तो ये कंपनी लगभग 3.5-4 हज़ार करोड़ की बनती हुई आपको देखने को मिलेगी। और क्या होने वाला है इसमें, एक पैसे कहाँ इस्तेमाल होंगे, बिजनेस मॉडल क्या, इसी को समझते हैं। हमारे साथ 2 कंपनी के अधिकारी हैं। एक का नाम है प्रसाद चलवाड़ी, जो फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। दूसरे भारद्वाज रचामुडुगु, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। सर, बहुत बहुत स्वागत है और एडवांस में शुभकामनाएं। तो प्रसाद जी, पहले तो मुझे ये समझाइए कि ये आपकी कंपनी क्या करती है। जितने हमने जानकारी दी तो बहुत बेसिक। सो लेट मी स्पीक इन इंग्लिश सर। हाँ, प्लीज। मैं हिंदी में बोलूंगा, जैसे हमारे दर्शक समझते हैं। मैंने पूछा क्या था, आप हिंदी, आप इंग्लिश। लाइक वी स्टार्टेड दिस कंपनी 17 years back in the year 2005. I'm a first generation entrepreneur. So before coming into this business, I was working as a software engineer living in America. So I wanted to come back, I want to start some retail, and that's where I started my research on which vertical to bet on. Based on my research, women-centric Indian ethnic is the category that will be growing forever, and that is there as long as our weddings, festivals, occasions are there. So with that thought, we started off our first brand, Kala Mandir, targeting the middle class. And second brand we have started was brand Mandir, targeting the high-end couture. And third brand was Kanchipuram Varamahalakshmi Silks, targeting the weddings, occasions and festivals. Fourth brand is KLM Fashion Mall. This is targeting the aspiring sections of the society with hybrid value fashion mall. So with this, in last 17 years, from 1 store to 54 stores. Today we have 54 stores in 4 states of South India. We have 1 brand to 4 successful and matured brands. From 3,000 square feet first year till to today, we have around 6 lakh square feet. From 50 employees, we have grown to 5,000 employees. Today, actively, we are working with hundreds and thousands of weavers, master weavers and vendors across length and breadth of India, more than 100 places. So from the beginning, our idea is to, target different sections of the society, meaning full spectrum of the market we are targeting. And we are very proud to say we are the youngest in this industry with just 17 years old to become one of the largest ethnic player in India, pan-India. And we are very proud to say we are the first ethnic brand, women-centric ethnic brand that to foray into the IPO. Okay. So, जब आप इंजीनियर थे और US में काम कर रहे थे, रिसर्च किया आपने, तो इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि विमेन एथनिक वेयर में उतरना है? साउथ में तो बहुत सारे ब्रांड है, ये कुछ खास इंस्पिरेशन था क्या? That's what, sir. See, for us, when you go for shopping, when you with a woman, for us, we buy 1 shirt, 1 pant. For them, they never come out with 1 sari. At least you need to buy 3 saris. That is the future. And also, irrespective of your budget, women spends more. If you take our Indian ethnic market,
more than 4/5 is Indian women, like women oriented market is हमने dominating. विमेन साइकोलॉजी भी पढ़ी होगी एक साड़ी मांग रही तो 4 दिखाओ, पता नहीं कौन सी No, that's the business model also, sir. Like because majority of our customers. Yeah, you wanted to add something. Yeah. Sir, whenever we talk about our festivity in जो भी घर में जो भी festival है, people tend to buy clothes. Yes. And women's wear is where majority of the budget goes. So since we are entirely working on occasion and wedding wear, generally this particular segment of the society do not run on budgets. अगर उसका budget 1000 रुपए तो I mean it'll always be 10 to 20% extra more than that. Yes. So it is the good thing that we are in the right industry and हमारा Indian festivities का अंत नहीं है sir, because 10 months out of 12 months you either have a festivity, occasion, wedding, event, कुछ ना कुछ It रहेगा. makes business sense. It makes business sense. मुझे ये बताइए, जो आप पैसा इकट्ठा रेज करेंगे इससे क्या इस्तेमाल करेंगे उसका, आप बताइए. Sir, we plan to raise about 600 crores of primary, out of which barring 50 crores which is towards repayment of debt, entire money is going towards opening up of our new stores. We propose to open about 30 stores, 25 of our Varamahalakshmi silk stores and 5 Kalamandir stores. All of them will be opened in a cluster format in and around Tamil Nadu and Chennai. And if you take about the core Tamil Nadu as a market, Tamil Nadu market has a potential which is equal to Andhra and Telangana put together. अभी आपका कंसंट्रेशन आंध्रा तेलंगाना में ज्यादा है. Abhi, at this point of time, लगभग 80% of the revenue is coming from these two states. तो why so much concentration in south only? आप पैन इंडिया है तो दूसरी जगह क्यों नहीं जा रहे? Sir, साड़ियाँ सब जगह चलती हैं. सही बात. Definitely sir, see, हमारा जो भी साड़ी है, north, south, east, west, wherever a saree is weaved, we tend to be there. हमारा sourcing भी वैसे ही चलता है. हमारा model जो भी है is always been cluster model. अभी ये cluster model has always helped us to distribute our expenditure. अब जो भी warehousing expenditure होगा, advertisement expenditure होगा और economies of scale भी होगा. Everything makes sense if you are able to go into a cluster model, and these 17 years we have been expanding like that. We have started our journey with Andhra Telangana, but we quickly went to Karnataka, now in Tamil Nadu. कंसोलिडेट करना है. सर अभी आप देख लिया तो 54 stores है. Our city presence is only 12 cities. मतलब we have so much potential markets in these 4 states where we wanted to be, and we have not even ठीक है, forwarded. fair enough. अभी तो आप उधर ही, अब ये जो 30 स्टोर खोलेंगे प्रसाद जी, मैं जानना चाहता हूँ कि एक स्टोर का ब्रेक इवन कितने समय में होता है, और यूनिट, आजकल यूनिट इकोनॉमिक्स समझने लगे, तो एक स्टोर की इकोनॉमिक्स बताइए. I think he will be better person to tell. अच्छा, आप ही बताओ. ज्यादा क्वेश्चन इधर ही जा रहे हैं. नहीं, आपके पास आता हूँ, मैं आता हूँ. Sir, अगर if you take our average store size, it is a 5,000 square feet store. Okay. And the capital expenditure required will be 5,500 rupees per square feet. So too close to around 2.5 to 2.6 crores will be your capital expenditure cost per store for a Varamahalakshmi store. And the inventory requirement will be around 20,000 rupees per square feet. So we can expect a store opening of about around 12.5 to 13 crores of rupees per store. Okay. And if you talk about our payback periods, in terms of our capital expenditure, we get a payback close to around 4.5 to 5 months. And in terms of our, with the inventory, we should expect anywhere between 16 to 17 months. If you take this format, it has a very, very high throughput than entire company's average. So since we have so these are company owned, company operated. Everything is company owned, company operated in a long lease model. Because sir, so if you are looking at such attractive payback, why would we wanted to get our money stuck in the real estate that we are having? Don't own real estate. It could be a franchisee model. One of the biggest competitor in your field, I'm not naming that, is an ethnic wear largest player. Correct. He is 100% franchisee model. So I'll tell you, I'll take this question, sir. See, basically it's all about number one, having a bandwidth, administrative bandwidth, and you have a logistic support, and third is you have infrastructure support. For us, the infrastructure, administrative and management bandwidth is good enough for another 60 stores, because we were ever growing from the day one. As I told you, we are the youngest to grow to this level in this industry. Our focus is always to look forward and prepare the ground for it. And second point, why not franchisee? Why we? Because being said this, that we have this strong, supporting points with us. When you look at our payback, he just told our capital expenditure payback is 6 months. 6 months. So why do I have to, when I have the strength to run the showrooms by myself? Agree. We never saw a need for the franchisee. At this point of time, our focus is... अगर 12 से 15 करोड़ रुपए एक स्टोर में खर्च हो रहे हैं खोलने में, और आपको एक स्टोर
दिल्ली में खोलना है या आगरा में खोलना है, बनारस में खोलना है, तो आप इसको फ्रेंचाइज कर सकते हैं। और चूंकि ये इतना मैनेज्ड बिजनेस है सीआरएम के थ्रू, तो आप कर सकते हैं। No, no, you're exactly for on the point, sir. expansion No, no, point no, of view. you're exactly the point. Because in the south we follow the cluster model. Right now we have the bandwidth to manage. As you said, because I'm restricted to speak more than 2 years beyond. Okay. Like, you know, when we expand to the different areas, yes, like, you know, the formula is there. It is very attractive, and we will be the first preference for the franchises. अच्छा, दूसरा, आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करते हैं? जो भी साड़ियाँ या जो भी आप कहते हैं, जो कि 80% आपका रेवेन्यू नहीं 65% रेवेन्यू साड़ी के थ्रू है, तो और अलग अलग वैरायटी कांचीवरम से लेकर बनारसी तक है ना, तो कैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप, और सोर्सिंग कैसे करते हैं? सर, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैकबोन फॉर आवर कंपनी हैज ऑलवेज बीन टेक्नोलॉजी. वी आर टॉकिंग अबाउट thousands and thousands of SKUs from hundreds and cities, different price points. At any given point of time, our customers are always having a large amount of options in our stores. What we do, sir, is every barcode that we try to capture 20 to 30 different data points about this product. And these data points could be body color, body size, pallu, blouse, everything else. So this data points will give us a great amount of insights in terms of how, when do we need to do a sourcing, what kind of price points are working in which store. And I'm very happy to say in the last 3 quarters, we also started using artificial intelligence and machine learning to a great extent to figure out the probability of selling in a store 1 versus store 2. Matlab, what we try to do is like we are trying to go into this product knowledge in a very, very deep manner, and that will drive our entire sourcing and supply chain. And talking about some sourcing and supply chain also, sir, if you take about, this is saris typically does not get manufactured in a factory setup. We need to work with weavers, vendors and master weavers, what we do. So we take these inputs and we give the inputs to them, and we have a distributed way of getting our inventory at a frequent intervals. हाँ, नहीं वो तो बात, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट से मेरा क्वेश्चन एक ये भी है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा आपका, तो कैसे आप मैनेज करते हैं? कितना अनसोल्ड इन्वेंट्री आपके पास होती है साल के अंत में? Sir, before getting there, the major factor why we maintain our inventory level so quick and so low is with a state-of-the-art incentive engine. So if I have to give you an example, the age of the product is directly proportionate to the incremental incentive that a salesman gets. So this works wonders. Abhi aap dekh lijiye, sir, sari is a category, is not something we go and you pick it up the rack. Somebody has to open, explain, tell the woman that, ma'am, aap is kapde is color mein achhe dikhte hai. It needs to be a lot of conversation. अगर आप right incentive दे दिया तो your sari is sold. इसीलिए सेल्समैन 4 दिखाते हैं इंसेंटिव देगा, ये सीखने वाली बात है। दूसरी चीज, मार्जिन की स्थिति क्या है अलग प्राइस पॉइंट पे, क्या क्या है? सर, डेफिनेटली 4 ब्रांड। अरे इसके साथ एक चीज और, मान लीजिए कला मंदिर वाला स्टोर है, 10 जगह है, कला मंदिर ही होगा ना, तो उसके बीच में कोई डिफरेंशियल है प्राइस पॉइंट का और मार्जिन? Sir, if I have to talk about a Kala Mandir store, more or less it will be same price points. However, competition के परिस्थिति से we tend to make a few changes based on the location, because for us the core is every store is carefully analyzed in terms of our target market product mix. इसलिए we don't just sell saris. 1/3 of revenue is coming from non-sari categories as well. So based on the competition, we have a detailed level of ground level team to do market intelligence. And उसके हिसाब से हम प्राइसिंग करते हैं. Broadly it will be on the same, right? Margin कितना है? So the company averages right now is around 39.1% is what we've declared last year. Across the lowest format of KLM and the highest Varma Lakshmi Silks, it's not too. ये जो साड़ी वाला सेगमेंट या एथनिक वेयर सेगमेंट है, हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है ना, बहुत 15-16% इज इंडस्ट्री ग्रोथ इन इंडिया, और हाईली ऑर्गेनाइज्ड लोकल प्लेयर्स का मैं नाम ले सकता हूँ जो कि लिस्टेड नहीं है। कुमरन्स के यहाँ बहुत चैलेंज है आपका, या और आपके टी नगर में जाइए तो 10 दुकानें और आपको मिलेंगी ना। ये भी बड़े प्लेयर हैं लेकिन लिस्टेड नहीं है, लेकिन आपको चैलेंज वहाँ पे होता होगा। तो इतने अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के बीच में आप कैसे अपने आप को स्टेब्लिश करें, नंबर 1। नंबर 2, जो एक्सपेंशन प्लान मैंने शुरू में पूछा वो क्वेश्चन मैं फिर यहाँ पे लेके आता हूँ कि कैसे आप अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं, वैल्यू चेन में आपको कहाँ फिट होते हैं आप? Sir, now talking about ये प्रसाद जी का सवाल ठीक है। So, like, you know, the competition, sir, like, you know, the reason why I chose this particular industry is because it is totally unorganized. We believed that we can make our mark by doing it so organized way. How are we doing it? Like, you know, number 1, like, you know, in our unorganized industry, generally, it happens between, like, you know, 1 or 2 people run the entire show. It's a people-centric. And in organized, the systems run the business. Because for us, from the beginning,
we have made the system so professional, everything data driven. हमारा organization में कोई अंदाजा करने का imagine करने का कोई मौका नहीं देता है. It's all data driven. And from the day one we have built very strong teams. So to build these systems and data driven systems and the team, initially we have spent a lot of money where everybody used to laugh at us because it is totally different than, it is totally against the thumb rule or policies in this industry. But we have followed what I learned in America with my education and I made it implemented here. That's the reason why we became one of the top 10 in just 17 years. These are the systems we make a lot of difference because, and also sourcing also. Generally in this unorganized industry, what happens is 4 or 5 family people will take that sourcing decisions and they will run entire show. For us, we have more than 150 people of buyer team, which is never heard, never seen in the industry. And everything is a collective data. No one person can take a single decision. And also that's the reason why we don't, never in our history, if I have to talk about our Varamahalakshmi store, in last 12 years, we have 19 stores today. Not even a single day, single store, we have to run our clearance sale, annual clearance sale or end of season sale. It is always a full price sale. Why we could able to do that? Because our prices, we do it very professionally. We, as he told, we have a professional systems in place where it will advise what price to be sold, when, how. You better understand. Yeah, because it is all scientific. To be very precise, how am I different? It is a technology company selling the Indian ethnic. That is the difference I can tell you. अमेरिका का इंजीनियर साड़ी बेच रहा है आंध्र प्रदेश, ये अपने आप में बड़ी बात है. थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को. मैंने इस इंडस्ट्री को इसलिए बहुत डीपली मजा आया बात करने में क्योंकि मैंने बहुत ग्राउंड पे जाके देखा है और ये बात सही है कि कभी आपको एथनिक वेयर में सेल नहीं दिखती. इवन वेदांत फैशन ने कभी सेल नहीं लगाई. तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है. और ये बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज मार्केट है हिंदुस्तान में. लाखों करोड़ का साड़ी का मार्केट है, उसमें भी बहुत छोटे प्लेयर्स हैं जो ऑर्गेनाइज्ड हैं. तो स्कोप बहुत है प्रसाद जी और भारद्वाज जी. इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे आगे ले जाते हैं क्योंकि पूरा देश खुला हुआ है. एक ही ब्रांडेड प्लेयर अब धीरे धीरे उतरने की कोशिश कर रहा है, टाइटन तनेरा. लेट्स सी क्या होता है. लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. थैंक यू सो मच. बेस्ट विशेस. आई होप. थैंक यू सर. थैंक यू. तो ये है साई सिल्क कला मंदिर, साउथ की कंपनी है. आंध्रा तेलंगाना अभी फोकस है. अभी वही फोकस आगे भी रहेगा. 30 नए स्टोर उधर ही खोलेंगे. 22 सितंबर तक IPO खुला हुआ है. छोटा सा एक ब्रेक.